Hello children, how are you? Welcome back to your English class. Children, this is the same chapter we had in the last video, that was the magic of Kondapalli toys. So in the last video we saw that different kinds of toys are made in Kondapalli, that is situated in Andhra Pradesh. That is, and Andhra Pradesh is located in the South India. So here we stopped. Now we'll start from the next paragraph. Konapalli toys are made in and around Konapalli, a little village in the Vijayawada district of Andhra Pradesh. So where this Konapalli situated? It is located in Andhra Pradesh and in the small village Vijayawada. The traditional craftsmen who make the famed toys are called Arya Kshatriyas. So, traditional craftsman, it means the craftsmen who create these toys, जो इन toys को बनाते हैं, basically they are traditional. They have been doing it for years. वो सालों से काम करते आ रहे हैं. So their toys are called Arya Kshatri. The toys are made at home and the work involves the entire family. And students, traditional जो काम होता है, most of the time the whole family is involved making or doing the same work. तो सारे family क्या करते हैं, सेम काम करते हैं. सो टॉयज़ जो टॉय मेकिंग है, दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द होल फैमिली. पूरी फैमिली उस काम को करती है. दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम one, let me just set it, yes. So this traditional art form has been handed down from one generation to another. It continues to be the main livelihood of the people of Konapalli. So children, when a same profession is done by a particular family, जनरेशन बाय जनरेशन, बहुत ना पीढ़ियों दर पीढ़ी जब ये एक ही काम होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल वर्क या ट्रेडिशनल बिजनेस हम कह सकते हैं. सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हु आर इन दिस विलेज, जो विजयवाड़ा विलेज है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन्वॉल्व इन द सेम वर्क. जनरेशन बाय जनरेशन वो सालों से इसी काम को करते आ रहे हैं. दे आर अर्निंग देयर लाइवलीहुड जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग टॉयज़. सो जो कोणापल्ली में लोग रहते हैं, उनका सिर्फ एक लाइवलीहुड का मतलब होता है सोर्स ऑफ अर्निंग. जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है वो सिर्फ टॉयज़ के ही थ्रू आता है, खिलौना बना करके ही आता है. नेक्स्ट इज द क्राफ्टमैन स्पेशलाइज इन थीम्स टेकन फ्रॉम देयर immediate surroundings. Scenes from rural life are carved and made into sets of various sizes. So what shapes are given to the toys? कैसे shapes दिए जाते हैं toys को? Most of the craftsmen, they give the shape of their surroundings. जो टॉय को शेप मिलता है, जो आकार मिलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सिमिलर टू देयर सराउंडिंग का मतलब है उनके आसपास जैसा भी चल रहा होता है. सो दे टेक द सेम थीम, वो वही थीम पर बेस्ड टॉयज़ को बनाते हैं. सीन्स फ्रॉम रूरल लाइफ आर कार्व्ड. सो सीन्स ऑफ रूरल लाइफ, रूरल का मतलब है जो शहर की ज़िंदगी होती है, वो जो सीन्स होते हैं, they are also carved. If you see here, so elephants के ऊपर some people are sitting. So it is showing the life of rural area के life दिखा रहे हैं, that how people are living their life. So इस तरीके से जो craftsmen होते हैं, they take the theme and they carve their toys. carve का मतलब होता है किसी चीज़ को गढ़ना. So they keep different sizes also of the toys के different size रखते हैं. Now how are they made? So now in this paragraph we'll see that how the toys are made by them. So how are they made? Let's see.
Although it is difficult to infuse life into small blocks of wood, the Konapalli toys are exceptions. Now, it is really difficult to shape them, uh, शेप देम बिल्कुल, जो उनकी सिविलाइजेशन है उसको शेप देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड्स, लकड़ी के ब्लॉक्स में बांटना, बनाना. बट स्टिल कोणापल्ली के जो क्राफ्टमैन है दे हैव मेड इट पॉसिबल एंड इट्स बीन एक्सेप्शन. ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन हो रहा है बिकॉज नो एल्स कैन मेक सच वंडरफुल और ब्यूटिफुल टॉयज लाइक कोणापल्ली क्राफ्टमैन डू इट. They are very lively. Every small detail, including the appearance of the face, is looked into the carefully carved. So they made the toys so real, so live that it is quite similar to live human beings, और जो लाइव बींग्स होते हैं बिल्कुल उसी के तरीके से सिमिलर लगता है. When it comes to their appearance, their face, their look, everything is quite similar to the real ones. Making these toys is no child's play. It takes a very long time to fashion each one. So making such fine toys is not a very easy task. Child's play means easy task या easy work. So it is not easy to make such beautiful or such fine toys. It takes very long. It takes lot of time to fashion each one. उन लोगों को शेप देने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. The toys are made out of locally available soft puniki wood, which is easy to carve. And how these toys are made up of? They are made up of a wood that is called पुनीकी. सो पुनीकी एक वुड होती है दैट इज़ सो सॉफ्ट, इट इज़ ईजी टू कार्व इट. सो जो मोस्ट ऑफ द क्राफ्टमैन होते हैं दे यूज दिस सॉफ्ट वुड सो दैट ईजली दे कैन कार्व द टॉयज एज पर देयर विशेज. It is subjected to a process of slow heating to draw out all the moisture. Now, how are they made? They made up of the wood that is called punaki. And the other thing that when it is subjected, when while making it, first they keep the toys on slow heat. उसको हल्की सी हीट पर उसको रखते हैं सो दैट ऑल द मॉइस्चर कैन ड्राई, सारा मॉइस्चर सूख जाए. The limbs are carved separately and later joined to the body. And the body parts of the toys, जो limbs means organs of the body. So जो body के parts होते हैं they are carved, they are made separately, and after making all the limbs, all the parts of the body, they are joined to complete a toy. टॉय के अलग अलग पार्ट्स को बनाते हैं देन दे आर जॉइंट, वो फिर जॉइन कर दिए जाते हैं. Now next paragraph, the glue used consists mainly of paste made from tamarind seeds, and the glue which is used to join the toys together that is made up of tamarind seeds, जो इमली के बीज होते हैं उससे बनता है. The brushes used to color the toys are very fine and sharp, made of goat's hair. And the brushes which are used to color the toys, they are made up of goat's hair, वो बकरी के बाल से बना होता है. Both watercolors and oil paints are used to paint. The carving tools are drill, hammer, axe, and bagudari, akrai, and chisel for finer work. So these are the tools which are used to give a real look to the toy. So different colors यूज़ होते हैं, carving के अलग अलग tools होते हैं, hammer है, axe है, akrai है. So they all are used, they are all are tools for making toys.
देन कम्स मिथोलॉजी. मिथोलॉजी मीन्स क्या होता है? मिथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मिथ्स. मिथ्स का मतलब होता है भ्रम, जो एक मान लिया गया हो या अज्यूम कर लिया जाता है. सो मिथोलॉजी, रूरल लाइफ एंड एनिमल्स आर द मेन थीम ऑन विच द टॉयज आर मेड. सो जो मिथोलॉजी है, जो स्टडी ऑफ मिथ्स है, उसके हिसाब से जो रूरल लाइफ होती है, एनिमल्स आर सो मोस्ट ऑफ द, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट जो क्राफ्टमैन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे कीप द थीम ऑफ देयर सराउंडिंग्स. सो सराउंडिंग्स में वट एवर दे सी इन रूरल लाइफ, दे सी इन एनिमल्स लाइफ, so they keep the same thing and then they make their toys. For example, swans, peacocks, parrots are popular themes too, as are slice of life themes. So swans हैं, peacocks हैं, parrots, they are the most popular themes for making toys. So toys बनाने के लिए ये ज़्यादातर थीम में रखे जाते हैं, ये birds और ये animals. Women drawing water from a well, snake. सो जो विमेन है और जो विमेन की पिक्चर है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो विमेन ड्रॉ की जाती है, दे आर शोन वाइल नो पुलिंग द वाटर फ्रॉम वेल. पानी खींचते हुए, कुएं से पानी भरते हुए उनकी फ़ोटोज़ या उनकी टॉयज़ बनाए जाते हैं. चार्मर्स, एलिफेंट्स विद अ महावत on its back, potters etc. What else? First thing that parrots, swans और peacocks वगैरह को लोग थीम बन लेते हैं. And from human beings life, most of the time what do they pick? They take the women pulling the water from well, या charmers, जो snake charmers होते हैं जो बीन बजाते हैं. So they are कार्व, उनकी जो पिक्चर्स ड्रॉ की जाती है. एलिफेंट्स जो महावत होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, एज यू सॉ इन द लास्ट चैप्टर, इफ यू सी हियर. सो सच टॉयज आर मेड इन द कोडापल्ली. सो दिस इज देयर बेसिकली मेन थिंग. नाउ पॉटर्स जो कुम्हार होते हैं, उनकी टॉयज बनाए जाते हैं, उनको शेप दे करके. Mythological figures are great favorites. Lord Krishna, the playful god, is known playing the flute with a cow listening on. And apart from all these things, Lord Krishna, playful god, we know that Lord Krishna used to be a playful child in his childhood. So बहुत ही playful god माने जाते हैं. And he is made while he is shown as a toy while playing flute, वो बांसुरी बजाते हुए, and cow उनके सॉन्ग को, उनकी बांसुरी को सुनते हुए ड्रॉ की जाती है, दिखाई जाती है, प्रेजेंट की जाती है थ्रू टॉयज़. Konapalli toys bring color and joy. They create awareness about rural life and folklore through play. Can you think of a better way to learn about the richness of Indian mythology? So, Konapalli toys, basically what message do they give everyone? They actually present the reality of the society or the surroundings of the society, and somewhere they entertain others. They bring color because the toys are very colorful, they entertain others. So apart from entertainment, they create awareness, लोगों को aware कराते हैं that what rural life is being followed by the people and what traditional stories are going on. So now the writer Sushma Shetty is asking us to get an idea, to get a better idea, to create awareness among the people about the richness of Indian mythology. Indian mythology को और कोई तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी जो ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, वो लोगों के बीच में हम स्प्रेड कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें. So if you have any idea, if you have any way
of spreading awareness of the culture, do let me know. In these days of mass produced Barbie dolls, these beautiful folk toys are a reminder that each one made by hand and so painstakingly is unique, and it creates a beautiful connection with the world around for the child. So nowadays, uh, as trend is getting changed, so same ways जो टॉयज़ का पैटर्न है दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग डे बाय डे. सो नाउ इन द ट्रेंड इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द toy shops keep Barbie dolls with them. Why? Because it is in trend. So children, if you see that this is also somewhere made by manually made by humans only. So this is a process that takes time. बहुत ही painstaking time painstaking process होता है. It needs attention, it needs extra care while making these toys, and somewhere it is unique also. Unique means one of its kind. It means it is so different, and it creates a beautiful connection, and through these toys only we get connected with the world, or even especially our children get connected with the world, with the society, with the tradition going on uh, in their surrounding. So children, this is all about the chapter. So I hope that you have understood this chapter, and you must have got the lesson from this chapter, that the writer wants us to be aware of the toys, uh, starting from the that were starting from Harappan civilization, and you can see the drastic change has come now from earlier to present era. So I hope that you have understood, children. Saying this, I would say bye bye, take care.